Okay, everyone, we are live now. हम जो उनसे पहले तलावत कुरान पाक करते हैं. लेट मी शेयर माय स्क्रीन, देन सेशन को स्टार्ट करेंगे. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. ओके एवरीवन, हम अपना वेबिनार स्टार्ट करते हैं. तो आज हमारे पास स्पेशल वेबिनार है जो कि हमारे पास वेबिनार का टाइटल है रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ एआई. कि लाइक एआई का रिस्पॉन्सिबल जो यूज़ किस तरह करके है. ठीक है. तो हमारे साथ सर साद खान है. मैं अगर सर साद खान का थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं, तो मेनली सर साद जो उनसे कस्टमर सक्सेस मैनेजर है यूएसए कैलिफोर्निया के अंदर. सर साद का जो उनसे 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो कि काम के करते हैं डिफरेंट सास बेस्ड एप्लीकेशंस, एलएलएम डिफरेंट सॉल्यूशंस जो उनसे हैं उनको स्केल अप किस तरह किया जाता है, किस तरह आप इतना कैपेबल सोल्यूशन बनाते हो कि वो लीड कर सकता है. सर साधारण जोन से हैं डिफरेंट जनरेटिव एआई और डिफरेंट एलएलएम बेस्ड डिफरेंट एप्लीकेशन जोन सी हैं उनकी इंटीग्रेशन किस तरह होती है उसके अंदर एक्सपर्टीज रखते हैं. देन डिफरेंट आपका जो आपका सोल्यूशन बनाया है, आपने जनरेटिव एआई सोल्यूशन बनाया है, आप उसका किस तरह बिजनेस इम्पैक्ट जनरेट कर सकते हो. लाइक किस तरह आपको ग्रोथ कर सकते हो, उसको किस तरह अपसेल कर सकते हो. तो हम सर साद को वेलकम करते हैं. सर साद, ओवर टू यू. आप अपना वेबिनार स्टार्ट कर सकते हैं. Hi, thank you for the introduction. Assalamu alaikum, everyone. As I mentioned, today we'll be talking about responsible use of AI. It'll be a bit of a shorter session, but just really with the coming changes and revolutions that are happening with AI, there aren't many guardrails that are there today. And so it'd be good to just keep these things in mind as you guys create applications using AI and hopefully start making a difference, in the world using AI. That difference is responsible, safe, and fair for everyone. So let me share my screen. One moment. Okay, perfect. Yeah, you can see the screen. Hopefully working. जी सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है. Okay, perfect. Yep. So mentioned today we'll be talking about kind of responsible uses of AI and how to just make sure that the applications, models, programs, whatever that you guys create using AI are ethical, responsible, fair, and they are equal for everyone, and they don't actually cause harm or cause issues. Because I know, sure, we've all heard the stories about AI and saying AI may cause bad things to happen, or AI may take over the world, or this or that, and just making sure that, and that only can not happen, or we can avoid those situations if we really make sure that as we create, our products, solutions, applications, or models, that we are following certain guidelines and just rules that make sure that AI will be used in only good ways. And so AI ethics, and this is actually a thing that will start to get bigger and bigger in the future, really just refers to kind of the moral principles and the techniques
that we use to just make sure that we, how to guide the development and the use of AI. And really, it comes down to, as I mentioned, AI is being used in a lot of um, slowly more important things. For example, making important decisions. Governments are starting to now use AI as well, and when they make decisions on politics or human rights or police and law and things like that. We really want to make sure that the way that we implement the AI and use the AI is always fair and uh, equal for everyone. Um, and the problem is that with AI, since it's so new, there aren't many guidelines and structures around how to use it properly. So, for example, with healthcare, for example, right? When we're talking about people's uh, healthcare data, their test results, their things like that. For example, in America, we have something called HIPAA, right? So that means there's very strict guidelines and rules that anyone who wants to make a healthcare application has to follow, so that people's health data is always safe, private. Um, Similar with finance, right? If you open a bank, there are very strict rules you have to follow to make sure that people's bank accounts are safe, that their money is safe. Those things right now, they do not exist with AI, right? We're trying to figure these things out, and the governments and the politicians are really trying to figure things out reactively or after the fact. And so, as people you know, governments and us, just as people figure these things out, the people who are making these things then have the responsibility of having to think about these things beforehand. Even if there's no rules today that are in the law, we still have to think about these things beforehand so that we don't make certain mistakes that could really, cause, harm or impact, to other people. Uh, So one thing with AI and training models and things of that nature, one of the biggest areas where fairness and accuracy and considering rights comes in really is around bias as well. So as you guys probably know, these AI models are just trained on data, right? And so even though it may be getting certain results after that training, certain models that may look correct, those models are purely based on just the data that they've been given, right? So, for example, facial recognition systems, they've been shown to have higher error rates for people of color, right? So, brown people, black people, South Asian, Middle Eastern, African people. Um, and that's mainly just because of the data that it's been trained on, right? And so even though it may get it right a certain amount of the time, many times it's wrong. And that's, again, just because of the data that it's been trained on and certain biases that it does have. Another even more kind of important example is the compass system that is used in the United States for um, criminal risk assessment. So that basically means um, there's an AI a model that's been trained to kind of see if a certain person would be at risk of being a criminal or may have broken the law, and that system is actually biased against African Americans. So it will most more likely deem that a certain person who is maybe has black skin and has an African American background is more likely to commit a crime just because of the data that it's been trained on, and not because of all the other
maybe different aspects, right? If have they ever broken the law before, or what how much education they have or whatever. Even with that data, it still is somewhat against African Americans, and that's purely again, AI isn't like humans where we actually think and we have prejudices and we have thoughts that racism and things like that. AI is purely just data. And so, but then since we as people are the ones training the AI, then our own biases, our own thought, the way that we think starts to leak into how that model's being trained, right? And so, maybe the data sets that we have available today are only built on certain, ideals or thoughts, hence then that data is used to train AI, and now that AI has the same unfair thoughts that humans have, right? And so the way that we can really ensure that kind of fairness is, as I mentioned, really making sure that the data sets that we are using are very diverse, making sure that the quality and kind of breadth of that data really covers a certain spectrum. So, if you are using something trained, for example, uh, say like a healthcare app, right, that maybe does diagnosis for a disease, you don't want to only use data that is only from Pakistan, right? Because then that say Dr. AI would only be very good at judging Pakistani problems or health problems, right? Only if you only use Pakistani data. You would want to use health data from different countries, from different parts of the world, so that AI would actually have a better understanding of humans in general, right? And not just Pakistani humans. And that's just example for a healthcare app. This goes for any type of model or AI that is out there. And then if you're not obviously if you're not training a model yourself, you would definitely want to do a bit of investigation of the models that you do choose to put in your applications, right? Making sure that what type of data is has this model really been trained on. Um, Regular bias audits. And so that's something that, of course, especially these bigger AI companies, they try to do as well, where, just an audit of asking certain questions that may, be, typically humans have a bias towards, and making sure that the AI really isn't having that bias itself. And sorry. And then inclusive design teams as well. So, the more it's been shown actually that the more different types of people and groups that are working together to create something, just because there's different types of people trying to create something, it gives it more you know less bias and more universality, right? So if there was an application only made by just American Caucasian white people, then they would have a bias versus a company that hires all different types of people, right? It might be white, black, Middle Eastern, South American, and if just because there are all those different types of people there working together, it actually helps reduce that bias because our own biases leak into the things we create. And so, as we use AI to build either create models or create applications. You It's very tough to understand how these things are making decisions. So I'm sure you've probably all used ChatGPT by now. When you ask ChatGPT a question, it doesn't directly show you how it got the answer, right? And so if it gives you a certain answer and it maybe has some bias, or maybe it's a little bit, wrong or unfair or making guesses, or if it's just literally just, you've probably heard of well, obviously hallucinations, right? If it's just fully hallucinating, how do you know that it's fully hallucinating? Like, how do you know, how it came to that decision, why it came to that decision? And so creating and implementing, transparency into these applications is actually very, crucial to make sure that, we are,
being fair, responsible, but then also we know how these things are making decisions so that if it is making a certain decision or wrong decision, we're able to catch it and understand why and how it's happening, and then be able to correct it over time. And so that's where transparency comes in, where building into your applications a certain way for the user to know how it came to a certain decision. एक्सक्यूज मी सर। Yeah. Yes. सर इफ पॉसिबल क्या हम आप उर्दू में बोल सकते हैं इफ Yeah, पॉसिबल। sure. बहुत I'll, बहुत शुक्रिया सर। yeah, sure. बता दो मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, but कोशिश करता हूँ। But इसमें क्या कहता है, जब आप लोग एप्लीकेशंस बना रहे हो अगर उसमें एक तरीका डालना था, आप लोगों को पता है वो एआई क्यों ऐसे कौन से डिसीजन ले रहा है, राइट? सो अगर उसने आपको, अगर आप लोगों ने कभी थिंकिंग मॉडल्स अगर यूज किया है लाइक चैट जीपीटी ओ 3 और जेमिनी 2.5 जो है, आपने नोटिस किया होगा, वो आपको थिंकिंग दिखाता है, राइट? आपको एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप बता रहा है, अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ, फिर मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ, अच्छा मैं ये डिसीजन इसलिए ले रहा हूँ, एंड उसकी वजह से आपको ज्यादा पता चलता है आपको वो आंसर उसने क्यों डिसाइड किया। एंड सो so जब आप लोग applications और अपने models भी train कर रहे हैं, ये एक aspect of transparency and explaining to the user वो कैसे decisions ले रहा है is actually very useful, not only obviously fairness and ethical reasons के लिए, but then also जब users को गलत information मिल रहा था, then आपको खुद ही एक data source में होता है like of how to improve your own product, right? अगर आप just chat GPT यूज कर रहे हो ना, आपको पता भी नहीं आंसर्स क्यों दे रहा है, then अपना फ्यूचर में अपना ही प्रोडक्ट कैसे इम्प्रूव करोगे अगर आप अगर पता नहीं है वो कैसे ये डिसीजन दे रहे हो, और वो ये भी नहीं पता अगर वो कब गलत है कब ठीक है। And so obviously AI में different types of models होते हैं, and each model different use cases के लिए होता है, but then also each model एक थोड़े जैसे फॉर एग्जांपल ये linear regression होते हैं, ये ज्यादा mathematical models होते हैं, prices and numbers, and ये इन type of models के लिए वो biases and the aspect थोड़े वो कम होते हैं, right? Because अगर अपने numbers होते हैं, math calculus like वो defined and strict होते हैं, but as आप थोड़े ज्यादा interpretive type of models पे जाते हो, जैसे neural networks जो होते हैं, जो लोग कहते हैं हमारे brain के तरीके काम करते हैं in terms of different जो neural networks होते हैं वो ज्यादा robust हो सकते हैं, right? But then उसमें also ज्यादा biases भी आसानी से आ जाते हैं, right? And then so depending on आपके जो use case होता है, अगर आप एक finance app बना रहे हो, और हेल्थ केयर जो भी ऐप बना रहे हो, अगर आपको बायस को रिड्यूस करना है, आप ज़्यादा ये डिटर्मिनिस्टिक टाइप ऑफ मॉडल्स पे जा सकते हो, जैसे डिसीजन ट्रीज और लिनियर रिग्रेशन, जिसमें ऑब्वियसली वो ज़्यादा ओपन एंडेड आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे, बट आपको ज़्यादा एक्यूरेसी एंड लेस अनबायस्ड आंसर्स भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा ओपन एंडेड टाइप ऑफ एप्लीकेशंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, देन आपको डेफिनेटली नोटिस करना होगा दैट बायसेस कैसे आ सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये बैंकिंग के अंदर फ्रॉड डिटेक्शन इज एक्चुअली बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर लोगों एआई को यूज करने के लिए कोशिश करें एआई को यूज करना, लेकिन ट्रिकी हो जाता है, because अगर कोई डिपेंडिंग ऑन जिस तरीके से वो ट्रेन हुए हैं एंड जिस डेटा पर एज वेल, आपको ये नहीं चाह रहा था कोई ट्रांजैक्शन और कोई बंदा
क्लीन होता है, उस पर फिर भी उस पर फ्रॉड डाल रहे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन अगेन उन्होंने एक्चुअली दिखाया डिफरेंट यूज केस में दिखाया, अगर आप अफ्रीकन अमेरिकन हो और अगर आपकी सैलरी कम होती है, थोड़ी ये मॉडल्स आपको ज़्यादा फ्रॉड अलर्ट उन पर ज़्यादा फ्रॉड अलर्ट्स आते हैं, इवन दो उन लोगों ने कभी गलत काम कभी किया नहीं है, just because of certain data points that and so you definitely want to make sure आप किस तरीके से कौन से मॉडल्स इस्तेमाल कर रहे हो. And just एक direct example actually very simple example जो है um, image classification के लिए ये लोग ट्राई कोशिश करते क्लासिफाई करने ग्रीन टैंक्स को तस्वीरों में से अगर एक ग्रीन टैंक उस तस्वीर में है, एंड सो जिस डेटा पे उन्होंने ट्रेन किया था, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो टैंक्स वो उनके बैकग्राउंड में ज़्यादा ग्रीन फॉरेस्टेड एरियाज थे, सो ग्रीन ट्रीज थे बैकग्राउंड में, एंड देन जो दूसरे टैंक्स थे वो ज़्यादा डेजर्ट टाइप एरियाज में थे. एंड सो ये लोग चाह रहे थे मॉडल को ट्रेन करने टैंक के ऊपर, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मॉडल एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स ट्रेन हुआ था जो बैकग्राउंड पे था. सो अगर बैकग्राउंड पे ग्रीन ट्रीज थे वो आपको बस बता देगा यहाँ पे एक ग्रीन टैंक है, and अगर बैकग्राउंड में डेजर्ट और ओपन एरियाज थे आपको बताता है यहाँ पर ग्रीन टैंक नहीं है और डिफरेंट टाइप ऑफ टैंक है. सो वो इवन दो उन लोग डेटा टैंक्स के ही डाल रहे थे, मॉडल जो है वो एक्चुअली बैकग्राउंड पर एक्सीडेंटली ट्रेन हो गया था. एंड सो वेरी सिंपल एग्जांपल, बट अगर आप रियली सोचो अगर इतनी सिंपल वे में मॉडल्स में बायस एंड ऐसी ट्रेनिंग हो रही है, जब आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स पे जाते हो देन उतने ही ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं टू मेक श्योर दैट वो accurately model decisions there होता है. Yeah. So, and then, yeah, I mean, दूसरे aspect ये obviously ये भी है, लोग already डरते हैं that, अगर आप चैट जीपीटी वगैरह कोई चीज़ें बता रहे हो तो अपने बारे में, वो obviously एक पब्लिक बिग मॉडल है, आपका डेटा लेके उस पर ट्रेन ऑल्सो ट्रेन कर रहे होते हैं. सो ये एस्पेक्ट आ जाता है दैट आप लोगों की प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी कैसे हैंडल कर रहे होते हैं, बिकॉज आप थोड़े कंट्रीज में स्पेशली यूरोप में जो जीडीपीआर है, एंड देन कैलिफोर्निया में भी है, बट स्पेशली यूरोप इज बहुत ही अच्छा है इसमें, that लोग लोगों की डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को लॉज इम्प्लीमेंट किए हुए हैं. एंड सो डेफिनेटली मेक श्योर करना चाहिए जब आप एप्लीकेशंस और जो प्रोडक्ट्स बना रहे हो that आप ये गाइडलाइंस एंड रूल्स को फॉलो कर रहे हो. एंड मेन डेफिनेटली चीज़ है, नंबर वन चीज़ तो होती है ये पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, एंड यूजुअली आप अगर कभी उसके बारे में पढ़ रहे हो इम्प्लीमेंट कर रहे हो वो उसका PII एक्रोनिम इस्तेमाल कर रहे होते हैं. बट बेसिकली उसके मायने जब जो भी इंफॉर्मेशन आप इस्तेमाल कर रहे हो उस पर कोई अटैचमेंट नहीं है जो यूज़र का से नेम है, ईमेल एड्रेस, होम एड्रेस, फ़ोन नंबर, वो सब को रिमूव करना होता है. सो इवन जब लोग कहते हैं गूगल और फेसबुक में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा होता है और मेरे बारे में सीख रहा होता है, इवन देन ये लोग एक्चुअली आपका नाम एंड ईमेल एड्रेस एंड सब कुछ उसमें से हटा के फिर आपका डेटा फिर भी ले लेते हैं उस पे पैसे बनाते हैं. लेकिन उनको ये सब इंफॉर्मेशन हटाना पड़ता है, स्पेशली जब लोगों छोटी स्टार्टअप्स और छोटी एप्लीकेशंस बनाना शुरू करते हैं. ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है जो लोग भूल जाते हैं और रियलाइज भी नहीं होता that ये आपको ये लेवल ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करना होता है. उसकी वजह से लोगों ऑब्वियसली ट्रबल में आ जाते हैं. सो डेफिनेटली अगर आप लोग कभी भी कुछ बना रहे हो एंड उस पर आप यूजर्स का डेटा स्टोर करके उसको इस्तेमाल कर रहे हो,
जब भी आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो उसमें से जो पर्सनली आइडेंटिफायर इंफॉर्मेशन होता है उसको डेफिनेटली हटाना पड़ता है। एंड देन टू डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं उसको कैसे यूज़ करो। जैसे एक अनोनिमस आईडी अटैच कर दो। सो अगर किसी का नेम एंड ईमेल एड्रेस सब हटा दिया बट देन उस पर आपने बस अनोनिमस आईडी अटैच करके देन आप यूज़ कर सकते हो। सो आपको पता अगर कि फ्यूचर जो डेटा आता है वही आईडी के से अटैच्ड है। लेकिन अगर कोई देखना चाहे उनको ये नहीं पता होगा इस बंदे का नाम क्या है, इसका एड्रेस क्या है, बस ये वाले एस्पेक्ट्स है। एंड ये ऑब्वियसली डेटा ब्रीचेस में भी जाता है। अगर आपको याद होगा अभी भी बहुत बड़े डेटा ब्रीचेस होते हैं बट 5-10 साल पहले स्पेशली जब ये बड़े बड़े डेटा ब्रीचेस होते थे लोगों के full name, addresses, passwords, social security numbers वगैरह सब ऑनलाइन लीक हो जाते थे। जब जो बड़े कंपनीज हैक कोई बड़े कंपनी को हैक करता है। लेकिन अब बिकॉज ये रूल्स की वजह से अगर कोई बड़े कंपनी को हैक भी कर ले उनको कोई किसी का कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ज़्यादातर मिलता नहीं है। राइट, सो हो सकता है उनमें भी किसी का मे बी नेम मिल जाए पर उनका एड्रेस नहीं मिलेगा, उनका या फ़ोन नंबर, उनके बैंक रिकॉर्ड्स वगैरह वो सब अनोनिमाइज्ड होते हैं। एंड सो स्पेशली एआई के साथ एंड स्पेशली अगर आप लोग ये ऑनलाइन मॉडल्स यूज़ कर रहे हो जैसे चैट जीपीटी और जेमिनी, वो लोग आपके डेटा पर अपने मॉडल्स को ट्रेन कर रहे होते हैं। सो अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है एंड उस आपके यूजर्स के इंफॉर्मेशन उस पर यूज हो रहा है जीपीटी और जिस चीज़ के साथ वो यूजर्स के इंफॉर्मेशन ओपन एआई और गूगल के पास जाके वो मॉडल्स पे ट्रेन हो रहा है। सो बिफोर आप ये लोगों के डेटा लेके जो एआई का साथ इस्तेमाल करो डेफिनेटली ऑलवेज उसको anonymize उसको क्लीन करना to make sure that आप उस रिस्क पे जा नहीं रहा। And sorry, sorry, I think मैंने नोट किया था चैट में लोग कहते क्वेश्चंस और हैंड्स रेज हो रहे थे। If you want to, I think halfway point पे अगर पॉज करके हम लोग क्वेश्चंस देना चाहे वरना मैं कंप्लीट भी कर सकता हूँ पहले जो भी ज़्यादा सेंस बनता है आप लोग को। जी सर, हमारे पास एक हैंड रेज है। जी सर नजीब, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। माइक को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साद बेटा, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो मैं देख रहा हूँ कि जो यू आर डूइंग वेरी वेरी गुड व्हेन यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, ओके। प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो उससे जो फ्रेगमेंटेड जो बात होती है ना उसमें समझ में आना लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होता है। और समझाने वाला जो है ना, जो पॉइंट मतलब लोगों को बताना चाह रहा है, वो थोड़ा सा मिस हो जाता है। तो क्योंकि यू आर वेरी एक्सपर्ट, तो तुम्हें अलाउ करना चाहिए कि तुम्हारी फ्रीडम जो है ना बोलने की, वो तुम्हें होनी चाहिए ताकि तुम करेक्टली लोगों को इंफॉर्मेशन पास कर सको। जस्ट जस्ट ए पॉइंट। No, definitely that, and that's why in the beginning started in English, but whatever is best for the whole class, happy English or do whichever. But I definitely agree. I'm much more comfortable in English. करेक्ट है या क्योंकि जो लोग यहाँ पे अभी या सुन सर, भी रहे हैं वो तमाम आप अंग्रेजी भी कंबाइन जानते करके हैं। पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Sorry. Eh? यस सर, सम पार्टिसिपेंट जो हैं वो उर्दू में कह रहे हैं और सम इंग्लिश में कह रहे हैं, तो वी कैन कंबाइन देम। लाइक एट सम पोर्शन वी कैन टॉक इन इंग्लिश एंड एट समवेयर वी कैन टॉक इन उर्दू। Okay. ठीक है. I'll try to do a bit of both then. Awesome. No, thank you. Any other questions or? एनीवन इफ हैव क्वेश्चन? Yes, sir, we can go forward. After that, we can take questions. Sorry.
right, may asthma throat. Correct. Um, all right, so accountability. So when you're making applications, like trail of accountability important out there, definitely. Just uh, for example, in the photo, you can see when you sometimes ask ChatGPT something, many times it actually will completely make up answers if it can't find an answer because these AI systems are right now configured to always try to give you an answer, right? And just because they're created to always try to give you an answer. If it doesn't, if it is not sure of a true answer, it will actually try to make something up. And so you definitely want to, if you're creating applications, especially ones that, chatbots that maybe give advice, uh, building into that application a sense of accountability and making sure that it is not trying to hallucinate or create an answer. Um, and so there are many ways to kind of implement those kind of safeguards as well. But one big example of how this really has hurt and affected people is with Boeing's it's 737 Max AI system, where I'm sure you may have heard over the last year or two, there have been many uh, crashes or problems or that with the Boeing airplanes that actually cost many lives, and a lot of people have died because of it. And that was just because of how the AI was making decisions. And so the way that it was, the system was set up, that um, it was making the incorrect decisions, and there was a strong lack of kind of just accountability and transparency of realizing that why is it doing this? And because people had not implemented and put in those guardrails and safeguards, it actually led to a lot of death. And so we really want to make sure that when we are creating these solutions and products, really is a clear sense of uh, accountability and transparency, and really having an idea of like why is it making certain decisions, and making sure that you thoroughly test all the different type of scenarios to make sure that it's not ever really hallucinating or making decisions that are incorrect. Yep. And so just as I was mentioning, um, you know, the balance between kind of giving, because the reason we use AI and create, applications using AI is because that AI is able to do such amazing things by itself that it saves you time, it saves you money. You're able to do research without spending 10 hours. ChatGPT will give you all the answers, or create reports, or create presentations. And so, yeah, the big point of AI is to, um, you know, have AI do a lot of the work. But when you do that, it also leads to an area where people aren't really checking that work. And so there is a balance where you definitely want to use AI for what the purpose is in terms of saving time and saving money, but then also always having a kind of level of human oversight where there is a process or a standard that you use to make sure that somebody is double checking the work that it is creating. Um, the certain areas definitely are, um, for example, and this definitely becomes more tricky in situations where, for example, with autonomous vehicles, um, when you people are building self-driving cars, they actually are having to figure out an answer to the question of
how the AI is supposed to decide when there's no way to avoid someone getting hurt, right? And so, one example is if the car is about to crash into somebody, right? If the car were to move out of the way and not crash into that person, but then on the sidewalk, there are other people standing on the sidewalk. So how do you tell an AI to make a decision between crashing into a car and crashing into a person or something else when no matter what the decision is, somebody is going to get hurt? How do you train an AI to make a decision on who is supposed to get hurt, right? And that's a very hard question to answer for a human. But now, as you make self-driving cars or anything else as well, um, it's just as hard to make the decisions for that AI as well, especially then when you put that AI into thousands of self-driving cars and all those cars are driving by themselves. I really want to make sure that the way that it's implemented, it follows a certain level of standards. And so human in the loop is kind of the industry term for having actually a framework where as an AI is working, there are certain points where it has to have a human come and check. So for example, I know especially in government and things like that, there's AI can make a lot of decisions or make a lot of create a lot of um, decisions or reports, but then before actually executing on a decision, it actually has to wait until a human comes and looks at everything and then hits approve, right? And so basically, human in the loop is basically AI does all the work, makes all the decisions, but then right before it finishes and executes, it waits for a human to look at everything and hit approve so that then it can move forward. Because if you were to just let fully AI just fully free, again, you're running into all these situations until really we have trained it with a certain level of guidelines and accuracy. And so, as really move forward, many different kind of issues and challenges come when using the use of AI. For example, deepfakes has definitely become a very big issue in terms of creating disinformation. I've seen deepfake videos of presidents and prime ministers and things like that, saying things and doing things, but then it's obviously a fake AI video, but it looks very, very real, right? And because of that, it's very hard for people to tell in general, especially with all the media and fake news and things like that. And so that definitely is an area where we have very little laws, right? So if someone creates a deep fake of somebody, there isn't not many actually uh, uh, final laws that would actually make that illegal or make that difficult for someone, or if they get caught, for them to have punishment like you would if you were to steal somebody's car or something like that. You would obviously go to jail, but with deepfakes there isn't many rules and laws yet. um Autonomous weapons as well, for example. You know Militaries and there's a lot of companies trying to create AI for war and military, and so it's very crucial to have you know these kind of ethical guidelines being followed around those, because when you start to give autonomy to an AI to go to war and take life and hurt people, it's very situation where it can really get out of hand unless there are a certain level of guidelines and regulations that are being followed. And many times
these companies are not doing the best job at following those. And so, as I mentioned, today, like there is not much rules, guidelines, and research around the ethics around AI and how to use it responsibly. And that is actually going to change and evolve over time. Like as I mentioned, for finance, you have the finance rules and laws, and you have these big organizations that make sure that no one breaks the law with healthcare or health information. Same thing. There's all these organizations and rules and laws, and so that is actually going to come with AI. But it's going to take people doing the research and really taking the time to create those laws and rules. And so that is actually a very big aspect of AI that not many people are actually putting time into. That is, it's a an area of opportunity, right? You may not be making the next big Facebook or Meta or whatever. However, that is one area where you can really have a strong impact and make a difference in the world. Helping develop those kind of guidelines and rules that are not don't exist today. And so just a few different real world examples. I think first one I already mentioned in terms of the compass algorithm that is used in the United States. Has been shown that it is very biased against African Americans. And so even if you know for innocent people, even it is will give negative results more for innocent African American people compared to innocent white people. And that is something that is, again, in the data. That's something that needs to be improved, and have those guidelines on how to improve that is actually more fair and more real and more true, right? It should only be giving negative guilty results for people who are actually guilty. Um, so AI is being very much used in hiring, right? And so similar to even the criminal part, when you're having an AI making a decision on if somebody is good or bad, um, depending on the data, it really can be biased, depending on the data that we provided. And so even with Amazon, right? I mean, Amazon's such a big company; they have all this, developers and money and power. But even then, their AI hiring tool was shown that it was biased against women, because it was again with the data, right? It was trained on the resumes that were given over the last 10 years. But then just the resumes over the last 10 years were just mostly men, because a lot of men, they do tech jobs or whatever, just in terms of the numbers, right? And just because there was more resumes that were from men, um, the AI decided to learn that to choose men over women, right? And then just if you really think about it, on the resume, nobody ever really actually puts man, woman, male, female, right? A resume doesn't usually have like, you never really put like if you're a man or a woman. However, just because m the resumes were from men, the data in of itself trained the AI to choose men, even though the resumes don't say man or woman, right? It's just like maybe how they write it or how they, the words that people use. And so that's something to really think about, like, in terms of how you're training your AI and the data being used, how it ends up, how the AI ends up deciding how to use it, right? Similar again with that the tank thing, right? You think you're training it on pictures of tanks, but then it actually was trained on the trees in the background, right? And so you really have to think about how it's using that data and how that bias is coming in, and then testing to make sure that it is doing exactly what you would expected it to do. The self-driving cars, I mentioned that already as well.
This is actually something that like is a kind of a philosophical discussion that happens in the AI communities of, if a car has to hit somebody, how does the car choose who to hit? And that's a very uh, hard question to answer, even as a human, if you're driving, but now you have to train an AI to make that decision, right? And then, yeah, as I mentioned, data privacy, a lot of um, the Cambridge Analytica scandal was actually, and there's a really good Netflix documentary, if you guys ever want to watch it, on Cambridge Analytica, where basically they were taking data from millions and millions of Facebook users without anyone agreeing, and then training AI and training models to win elections, right? So apparently, this is something that Trump had used, and there's something that apparently I think Modi had used as well, where you use it to learn all these what people are feeling and thinking, and then sending them ads and political ads and things like that to convince them to vote for you. So if I, I I live in Pakistani. I live in California. So my ad would be very different than ad of somebody living in a different state or in a different country, and it would say almost maybe sometimes the opposite thing, just because it knows that I would like to hear it, and then now I will vote for you. So it could just be fully lies, but it doesn't matter as long as it makes me say yes, I will vote for you. And so that is it. A very interesting documentary on online if you want to watch, but of how the people's data is used to lie and convince them for things that without their consent. Yep. And so kind of coming back to um, uh, probably the main use cases or how everyone in the class is probably using AI today in terms of using GPT or using Gemini or Claude, um, really around kind of prompt engineering, right? And so we've thought, I'm sure you guys have learned and thought of really a lot about um, being better at prompt engineering for getting better results and for the applications that you guys are making and for the results that you like that you're wanting, but then also with this kind of responsible use of AI and having those guardrails and guidelines that also actually comes into prompt engineering, right? And so the way that you create the prompt and give it the AI kind of instructions can also help the guide the AI to be to give more accurate, more useful responses, to give more fair responses, and to not hallucinate, to make sure that it always double checks its answers. Um, and so one way that I've definitely have seen um, in your prompts, if you actually literally, if you just put do not assume any answers. If you think you're not sure, just say you're not sure, right? Or if you are not sure, ask me follow-up questions, right? And it will actually ask follow-up questions or actually say, I am not sure about this, just because you told it to. And then if you did not put that in, it will make up a fake answer, right? And so that's like an aspect of prompt engineering that definitely should be used more and more, especially if you're, creating applications that, make certain decisions, or maybe if it's giving, you're making a doctor application that, tries to, act like a doctor, you want it to not guess, right? You want it to really make sure that it knows. And so just in the prompt itself, if you were to just instruct it to, not if it isn't sure, for it to say I'm not sure or ask follow-up questions. Another aspect is you can actually say only
answer if you have 95% confidence in your answer or 90% confidence. And if you don't, then say you don't, right? And so it'll actually try to get, see if it is sure enough. And that really reduces the amount of guessing and hallucinations that the AI makes. And so just kind of a few different tips for prompt engineering. You definitely always want to be very clear and specific. And so you want to really uh, state kind of exactly what you are looking for, very clean and clearly. A lot of times people, just put into ChatGPT, just, give me this, right? However, what would be better is, to say like, what are you looking for, why you're looking for it, and then also how do you want, the answer and how much detail you want the answer. Um, what I do sometimes, a lot of time in my prompt is saying at the very end, I just say, double check your work with and validate with sources and tell me your sources. Right. So at the end, I just say double check your work with and validate with online sources, and then tell me what your sources are. And so just because I put that, it actually will look up online to make sure that it's, that what is said is correct, double check that it's correct, and then tell me the links that it used to double check that it's correct. Again, just because I told it to do that. And if I didn't, sometimes it would just make up answers. Using examples as well. Examples is a very strong way of improving your prompts. And so, just telling it giving it the format of the response that you want. And so that may be, I want it in this detail and I want, this number of sources, and then giving it an example of like what the answer should look like, will actually make it give more specifically exactly what you are looking for and the level of detail and the level of accuracy that you're looking for. Iterate and refining as well. There's really great tools on OpenAI's API platform or Claude's API platform, where you can test different prompts and see the results and do little changes. Maybe you change one word, maybe you add a sentence and see what the difference is. Because you don't want to just go with the first prompt that you made, because if you were to really test, and it's the same with obviously, I think, just creating code and applications, right? You, if you keep testing and changing and improving, your code and your application gets better. The same with the prompts, all right? And they'll get better as well. Constraints, there's kind of what I mentioned, right? It's giving it, that certain level of scope. List 3 benefits of AI. So telling it you want 3 benefits, or saying, give me 5 sources from online that prove your answer, right? That would make the AI actually give you more accurate answer because now it has to tell you where it got the answer. Asking direct questions as well, you'll get more direct answers. And however, if you want, open-ended answers, then you can ask open-ended questions. That's how the AI really works. So more specific, the way that you give the prompt, it will speak back to you in the same style. And then step-by-step instructions is actually has been very useful for me as well. I will give it what I want and what the context is, but then right after I will say, your task is 1, do this, 2, do this, 3, do this. And that actually will make it obviously do your steps and give a very much more specific answer versus it guessing, because the AI is the way even AI is built is based off of just guessing, right? Like it is always trying to figure out what the next word is going to be from probability. And so it really is literally just guessing the next word unless you tell it exactly what it needs to do. So for example, many times I will always put step 1, research online and find 20
websites or sources, that teach something, or give you information about this. I'll do number two, read all of those sources and give me a report on all the data that you found. And then I'll say three, now answer my question. And that actually will make a big difference where if steps one and two are research online, find information in X amount sources, 10 sources, 100 sources, whatever. Number two is saying, give me a report of everything that you learned. And then number three is actually what you wanted, the actual prompt. And that will make actually a big difference. And there's a great resources on promptingguide.ai as well, to learn as well. And there's amazing classes and guides online as well. And yeah, so just as uh, just an example, right? And so again, being that kind of specific, using examples and giving constraints. This is uh, a prompt for an AI to create prompts, right? A prompt generator. And so one, at the start, telling it that it is a prompt generator, and then asking it, I want you to be a prompt generator, and then telling it all the context, right? Instead of saying, I want this prompt, right? Here it's literally saying, first, I will give you a title, act as, English pronunciation helper. Then then you tell it, I want you to give me a prompt like this. So that's the example, right? I want you to act as and so having this much detail, really instructs it to be a lot more accurate, to not guess, not to hallucinate, to be less biased. Um, and so, yeah, and so, if you were to, and I'm sure we'll share these slides afterwards as well, but this is the kind of level of detail that, and this is actually not that much detail. Sometimes the prompts that I write are like 1 page long, huge prompts of examples and, specifics. Wait, what's the speaker? Sorry. There we go. Okay. Yeah. Yeah, but having a very specific detail on exactly what you're looking for and things like that, definitely makes a huge difference. And for me, my personal recommendation definitely would be having that level of giving it steps, step one, step two, and in the first couple of steps, telling it step one, research. Step two, give me a report of your research. And step three is actually, actually your prompt, right? And just because it did the research and it told you the research, it what it outputted, it goes into the context for its next decision. And so because of that, it will be more accurate and not just hallucinate and make things up. Again, yeah, another different example. This one's a little bit more coding based, but really giving it that kind of background of what type of data the user will upload, what it's supposed to do, and also providing the documentation. So this is the other thing as well is pretty much all the models are trained on data that are almost a year old or something like that. But they're all data that is not today's data, right? They're all data that is at least maybe like 6 to 12 to whatever months old. And so, for example, if you're asking GPT to create code for you, it's going to use documentation from a year ago, right? And that's why sometimes you'll get some code that is not, not using the latest information, or maybe APIs changed and it's using old APIs. It's all because it's trained on information a year ago. And that goes for other things too, right? If you're asking for, health data or finance data or, certain things,
Now GPT and some of these models, they have web search, so they look up things online, but they don't look up things online every single time. It tries to decide when it should, but especially with coding, I don't think it looks up things online until you tell it look up the documentation online. So when I use GPT to code, I usually always, again, I stay step one, step two, step one, look up the latest documentation for, you know, Python, TypeScript, and Next.js, React, um, and then I tell it to do what I want it to do. Because if I don't tell it to look up the latest documentation, it will use information from 1 year ago. And that, again, goes into different things in terms of kind of, the ethics of things. If big things have happened or changed over the last year, and you aren't telling it to find the latest data or use the latest data, then it will use old information to make decisions for people, right? Which is, depending on what you're making, could have a big impact. Yeah, but no, that was pretty much it. I know, and sorry, I at the end didn't speak too much further. I just, much better at explaining in, in English. So I'm happy to answer questions if people have questions, and happy to go back to slides and explain in Urdu if people have questions also. ओके एवरीवन, आप अपना हैंड रेस करें, मैं वन बाय वन नेम कॉल करता हूँ एंड वी कैन टेक क्वेश्चंस देन। जी सर, मुबशिर। वालेकुम सर। बाद तो में मैं सर। क्वेश्चन सर मुबशिर, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं ऑडिबल Yeah, yes. If you speak a little, just sort of louder. सर। so it is true that the models like DeepSeek or GPT selling our data to the third party है। Sorry, आपके आवाज आ रही है, पर वॉल्यूम बहुत कम है। थोड़ा ऊंचा बोल सकते हैं? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जीपीटी और डीपसीक जो है, क्या ये पॉसिबल है कि ये जो हमारा डेटा है ये थर्ड पार्टी ऐप को दे दिया, देख लिया, जैसे क्या कहते हैं फेसबुक में पास नहीं किया। सॉरी, अभी भी आपका क्वेश्चन पूरा नहीं समझ आया। जीपीटी जब है, जीपीटी के बारे में क्या पूछ रहे थे? और अगर आप थोड़ा थोड़ा से ऊंचे बोल सकते हो, सॉरी। तो क्या ये ट्रू है कि जीपीटी और डीपसीक जो है हमारा जो डेटा है वो किसी थर्ड पार्टी ऐप को बेच रहे हैं, जैसे फेसबुक ने लास्ट में किया था किसी ऐप को लेकर। हाँ, सर आई थिंक सर ये कह रहे हैं कि जीपीटी और डीप सीक के ऊपर जो हमारा डेटा है वो क्या जी। ट्रेन होता रहता है, आई थिंक ये कह रहे हैं। हाँ, अच्छा है, बस ये पूछ मैं। ओके। हाँ, डेफिनेटली सर, ये सब ऑनलाइन पब्लिक मॉडल्स जो है, आपके डेटा पर ट्रेन हो रहे होते हैं। सो जो भी आप उनको बता रहे होते हैं, एक्चुअली वापस जाके उनके डेटाबेस में जाके वो ट्रेन हो रहा होता है। अगेन, वो फॉलो करते हैं वो जो रिमूविंग द पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन। सो जो जो भी आप जीपीटी को बता रहे होते हो, वो आपका नाम रिमूव कर देंगे, आपका ईमेल एड्रेस एंड सब इंफॉर्मेशन रिमूव करके। पर लेकिन जो आपने जीपीटी को बोला था, वो डेफिनेटली जीपीटी के पास वापस जाके उस पर ट्रेन हो रहा है। और डीप सीक और जेमिनाई जो भी, वो डेफिनेटली इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है आपका नाम हटा लेंगे, but लेकिन जो आपने उसको बोला था वो डेफिनेटली उस पर ट्रेन हो रहा होगा। ओके ऐसे। जी। सर उसामा, उसामा बलूच। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बहुत ही वंडरफुल आपने वेबिनार दिया। सर मेरा क्वेश्चन है कि जितने भी हमारे मॉडल्स होते हैं हेल्थ से रिलेटेड, जैसे हमने आजकल कुछ साल पहले हमने सुना था कि जो ऐसे मॉडल्स होंगे जो आपके जो बीमारी है उसको डिटेक्ट करेंगे, या इस तरह के जो मॉडल होंगे। और दूसरे टाइप के उस टाइप के मॉडल्स जो कि फॉर एग्जांपल जैसे एक लॉयर्स होते हैं जो कि आपको एक लीगल एडवाइस देते हैं। तो ये इस तरह के जो मॉडल्स होती हैं इनकी एक्सेप्टेंस इतनी कम क्यों होती है, और इनको ओवरऑल मार्केट में आने में इतना टाइम क्यों लगता है? मतलब हाँ इनके जी। अंदर जी जी,
हाँ नहीं, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एंड जो जिस रीजन की वजह से बहुत टाइम लगता है एक्सेप्ट होने में इज लिटरली बिकॉज ऑफ जो हम लोग आज बात कर रहे थे, राइट। इसलिए अगर आप कोई हेल्थ डिसीजंस ले रहे हो और आपको एक एआई बता रहा है आपका कौन सी बीमारी है आपके पास, अगर वो एआई हलूसिनेट कर रहा है एंड वो एआई सही तरीके से आंसर नहीं दे रहा है, देन ऑब्वियसली बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। अगर डॉक्टर भी आपको एक ह्यूमन डॉक्टर जो है, अगर वो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे दे, उसकी जॉब खतरे में आ जाती है, राइट। एंड सो सेम विद एआई, एक्सेप्ट आप एआई को सू नहीं कर सकते और आप जेल नहीं लेके जा सकते। सो इस वजह से जब तक एआई एक लेवल पे नहीं आए जो आप ट्रस्ट कर सकते हो उसको, इन सिचुएशंस में, हेल्थ और डॉक्टर सिचुएशंस में, लॉयर, लॉ वाली सिचुएशंस, फाइनेंस वाली सिचुएशंस में लोगों को बता रहा है अपने पैसे कहाँ डालो। और जब तक ये एक लेवल ऑफ accuracy and honestly ये actually interesting aspect है। जब तक ये ethics जो है properly implement ना हो, इस वाली situations में मुश्किल ही होगा, राइट। डॉक्टर्स, लॉयर्स, फाइनेंस एआई को इस्तेमाल करने, बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर आप एक एआई बनाओ जो किसी का बीमारी डायग्नोस करने के लिए, अगर वो एआई को उससे पता चल जाए वो आप पाकिस्तानी हो और आप अफ्रीकन हो और आप चाइनीज हो और आप स्पेनिश हो, उस पे ही एक्चुअली वो एक डिसीजन ले सकता है, इवन दो वो completely गलत हो सकता है। वो कहेगा पाकिस्तानियों को बहुत दफ़ा ये प्रॉब्लम्स होती है, हो सकता है तुम्हें ये प्रॉब्लम है, लेकिन राइट जस्ट बिकॉज ऑफ बायस, राइट। सेम सेम थिंग विद वो लॉ वाली, वो यूएस में अफ्रीकन अमेरिकन को ज़्यादा गिल्टी कहता है जस्ट बिकॉज वो डेटा की वजह से वो डिसीजन देता है। सेम थिंग विद हेल्थ और लॉ और फाइनेंस। सो जब तक ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो और लोगों में बेहतर मॉडल्स नहीं बनाए यूजिंग ये काइंड ऑफ एथिकल तरीके, it'd be difficult for situations जो आपने बोला, doctors, lawyers and yeah. All right. Next question है जी सर, हाफिज वकार। अलैक्म सर। वालेकुम। सर थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा नॉलेज शेयर किया है आज, और ख़ास तौर पे वो एक्सपेक्ट बताया है जो अभी नॉर्मली लोगों के जहनों में नहीं होता, कि जो आपने ये एथिकल वे वाला नॉलेज बताया, क्योंकि नॉर्मली अभी लोग यही समझते हैं कि जीपीटी सब कुछ ही है बस। तो ये बड़ी अच्छी आपने एक्सपेक्ट एक बताई है। मेरा सर ये क्वेश्चन था, आपकी स्लाइड्स में जो है ना वो एक चीज़ आई थी कि ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो होनी चाहिए, वो बड़ी अच्छी मुझे लगी एथिकल वे में। तो मैं सर आपसे ये थोड़ा गाइडलाइन लेना चाह रहा हूँ कि इन फ्यूचर जैसे जैसे ये लॉयर का काम होता है, तो अब फ्यूचर में सारी चीज़ें जो हैं वो इस चीज़ पे शिफ्ट हो रही हैं कि वो जीपीटी के थ्रू हेल्प ली जाए ना, मतलब एआई के थ्रू। तो मेरा ये आपसे क्वेश्चन था कि जैसे ये आपने पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो होनी चाहिए, तो इसमें क्या चीज़ ऐसी जीपीटी को दी जाए या उसमें फीड की जाए, मतलब एक स्टैंडर्डाइज की जाए, कि जहाँ पे वो हेलुसिनेशन कर रहा हो या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा हो कि जो मतलब वो करेक्ट ना हो, तो वो अपनी लिमिटेशन ये शो करे कि यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन या किसी एक्सपर्ट की जरूरत होगी, आप उसको कंसल्ट करें। तो मेरा ये आपसे क्वेश्चन था कि ये जरा काइंडली गाइड करें कि ये कैसे चीज़ स्टैंडर्डाइज हो सकती है। नहीं, definitely सबसे बड़ी चीज डेफिनेटली है अपने प्रॉम्प्ट के अंदर, है जो आप प्रॉम्प्ट बना रहे होते हो, ये वाली एस्पेक्ट्स डालना, राइट। सो अगर आप उसको, जैसे मैं आई थिंक अर्लियर कह रहा था, उसको बोलना अनलेस आप 80% और 90% और 95% और थोड़े लोग 97% कॉन्फिडेंस जो है, अनलेस आपके पास 97% कॉन्फिडेंस है, आप मुझे बोलो आया मुझे मुझे आंसर नहीं पता है,
right? So अगर आप literally अगर अपने prompt के अंदर यही डालो, and if you have under 95% confidence, just say state that you are unsure about the answer, or ऐसी वाली चीजें, it will actually try to determine उसका kitna level of confidence, and stop itself, and uh, tell you that directly. A दूसरा aspect definitely is as well, um, similar, अगर आप एक complicated situation के बारे में एक prompt को GPT से पूछ रहे हो, उसको यही बोलना है, if you are unsure about uh, anything, or if you have less than 97% confidence, ask me follow-up questions. So अगर आप actually literally अगर आप GPT के prompt के अंदर डालो, if you are not sure, ask me questions. वो आप एक्चुअली बीच में रुक के आपको क्वेश्चंस पूछेगा, अच्छा एक्चुअली मुझे ये नहीं पता, मुझे बता सकते हो आपका, से अगर आप एग्जाम वो हेल्थ केयर डॉक्टर वाले आप बना रहे हो, वो अगर एक्चुअली आप आपकी एज क्या है, आप कितना एक्सरसाइज करते हो, आप आपके फैमिली में हिस्ट्री है इस डिजीज की और कुछ, एंड देन आप उसको जवाब दे सकते हो, बट अनलेस अगर आप प्रॉम्प्ट के अंदर डालो ask me questions if you are not sure, वो questions नहीं पूछेगा, right? And then जो आप उस बात पे कर रहे हो in terms of actually actions लेने पर, so जो more जो agentic workflows जो होते हैं, so GPT आपको सिर्फ अभी जवाब देता है, अब शुरू कर रहा है that आप decisions भी लेगा, like actually जाके आपके ऑनलाइन जाके चीज़ें एक्शंस लेगा और रिपोर्ट्स बना के ईमेल करेगा जो भी वगैरह, अगेन प्रॉम्प्ट के अंदर आप डालो, अगर आप स्टेप बाय स्टेप, स्पेशली वो स्टेप्स जो होते हैं, अगर आप उसको बता लो योर स्टेप्स आर योर टास्क इज, एंड आखिरी स्टेप पर आपका आखिरी स्टेप ये होगा, बिफोर making a decision or finalizing, give me full report and ask me to validate it, right? So if you put that as the last step, it will actually, before it decides to say like ये answer है, um, आपको पूरा report and अपना research and जवाब देगा, and then कहेगा please read it and tell me if I'm correct, and then अगर आप कहोगे yeah you're good, then वो final करके final कर देगा, and अगर आप कहोगे no आप यहाँ पर गलत हो, वहाँ पर गलत हो, फिर वो एक्चुअली जाके आपकी फीडबैक लेके अपना जवाब को एडजस्ट करेगा, सो आपको बस बेसिकली प्रॉम्प्ट के अंदर बताना होगा उसको, डबल चेक करने का, आपसे वैलिडेट करने का, एंड सबसे एक्चुअली बहुत मेरे लिए टू थिंग्स सबसे यूजफुल हो है, उसको वन शुरू में कहना अपना ऑनलाइन रिसर्च करके अपना रिसर्च मुझे अपना रिसर्च रिपोर्ट दो, एंड देन फिर अपना काम करो, उसकी वजह से वो एक्चुअली रिसर्च करेगा, एंड देन आफ्टर एंड में अगर आप फुली कॉन्फिडेंट नहीं हो, मेरे से जवाब पूछो, एंड मेरे से डबल चेक करवाओ बिफोर आप मुझे अपना फाइनल आंसर दोगे, एंड अगर आप उसको ये इंस्ट्रक्शंस दोगे, ये ह्यूमन इन द लूप एंड डबल चेक का इम्प्लीमेंट हो जाएगा। थैंक यू सर, वेरी वेल एक्सप्लेन, थैंक यू। जी सर, अहमद सना। Assalamu alaikum, sir. First of all, sir, I really appreciate the effort you put in today's session. Actually, my question is related to prompt. Like you mentioned in the prompt that act as a programmer or translator, something similar like that. The question is that if we are working on multiple models for different tasks, if we combine multiple roles in a single prompt, will it work better or create any hallucination? If you combine multiple models in a single prompt, or what was Yes. Means if we combine multiple roles in a single prompt, will it create a good app or not? Means can create any hallucination or not while generating the answer? all right, and so when you say multiple models, like different GPT and Gemini एक ही
एक ही प्रॉम्प्ट में करो, और इन व्हाट सेंस? बिकॉज डेफिनेटली जितना मैं ये कहूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने परप्लेक्सिटी जो है, अगर कभी इस्तेमाल किया परप्लेक्सिटी, गूगल सर्च से compete कर रहा है, बिकॉज परप्लेक्सिटी ने अपना कोई स्पेसिफिक मॉडल नहीं बनाया एग्जैक्टली। परप्लेक्सिटी ये करता है, जब आप उससे एक जवाब पूछते हो, वो जाके जीपीटी से पूछता है, जेमिनाई से पूछता है, क्लॉड से पूछता है, वो तीनों के जवाब लेके वो कंबाइन करके आपको एक, एंड देन वो कंबाइन करके डबल चेक करता है, एंड देन आपको जवाब देता है। एंड सो अगर आप परप्लेक्सिटी यूज करो, इट्स एक्चुअली परप्लेक्सिटी इज द बेस्ट सर्च टूल, राइट? अगर आपका कोई क्वेश्चन है, जवाब है, लाइक क्वेश्चन है जिसका आप जवाब ढूंढ रहे हो ऑनलाइन, परप्लेक्सिटी इज एक्चुअली द बेस्ट, बिकॉज वो तीनों को लेके उनके जवाब लेके कंबाइन करता है, डबल चेक करता है। एंड सो या, सो अगर आप ये कह रहे हो, एक सिंगल प्रॉम्प्ट आई गेस नहीं, पर लाइक एक एक्शन और रिजल्ट के लिए आप मल्टीपल मॉडल इस्तेमाल करो, आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, अगर आप उन डिफरेंट मॉडल्स के रिस्पॉन्सेज को प्रॉपरली कंबाइन करके डबल चेक करो। या बिकॉज हर मॉडल डिफरेंट तरीके से ट्रेन हुए हैं, सो या आपके पॉइंट पर अगर आप मल्टीपल मॉडल्स यूज करो, उनके जवाब लेके डबल चेक करो, देन यू हैव अ बिगर आंसर। Okay, sir. Thank you. सामा बलोच। अस्सलाम सर, थैंक यू सर फॉर आंसरिंग माय प्रीवियस क्वेश्चन। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी रिसेंटली हमने देखा है ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं सुपर इंटेलिजेंस के अंदर, और अभी जैसे ग्रोक 4 भी रिलीज हुआ तो न्यूज़ आ रही थी कि वी आर नियर एजीआई। तो मैं मुझे आपका टेक जानना है कि अभी रिसेंटली आर वी कैपेबल इनफ टू क्रिएट एन एजीआई, और अगर एजीआई हमने अचीव भी कर लिया आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, तो हम उसे एक एथिकल नेट के अंदर कैसे ला सकते हैं? मेक सेंस। आई थिंक हम लोग बहुत करीब आ रहे हैं। आई मीन आप अगर हम लोग सच ही चाहे, हम लोग ओपन एआई और जो भी एज एक फुली एआई बना सकते हैं, जिस वजह से हमने अभी तक पूरा बनाया नहीं है, बिकॉज ऑफ दी सेम एथिकल रीजंस। बिकॉज वो बना सकते हैं, पर लेकिन अगर उनका एजीआई मॉडल जो है जाके गलत चीजें करना शुरू हो जाए, उन पर सवाल उन पर आ जाता है, उनको उसके बारे में जवाब देना होगा। एंड सो वो लोगों ने, ये कंपनीज अभी तक रिलीज इसलिए नहीं किया, बिकॉज वही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे, हाउ डू यू मेक श्योर वो हर चीज एक्यूरेटली डिसीजंस ले रहा है, एंड गलत डिसीजंस नहीं ले रहा। एंड सो अगर आप खुद ही बनाने की कोशिश कर रहे हो ऐसे टाइप ऑफ मॉडल, उस पर यही एक फ्रेमवर्क बनाना जरूरी होता है, right? अब आपके रिस्ट्रिक्शंस क्या है, गाइडलाइंस क्या है मॉडल के लिए, वो किस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे एक डिसीजन ले सकता है, राइट? बिकॉज एजीआई का यही मायने है, राइट? वो डिसीजंस एंड एक्शंस ले रहा है खुद ही अपने अपने रिसर्च पर जो भी, लेकिन आप पर ये होता है डिफाइन करने, आप कब डिसीजन ले सकते हो, और आपके पास कितना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आप डिफाइन कैसे करते हो, राइट? लाइक आपको अगर आप उसको बोलो भी 95% कॉन्फिडेंस, 95% कॉन्फिडेंस होता क्या है? सो अगेन गोइंग एग्जांपल्स होते हैं, डेफिनेशंस होते हैं, आपको वही डिफाइन करने होते हैं, सो दैट इट्स वेरी वेरी स्पेसिफिक। अदरवाइज वो अगेन बस गेस करेगा एंड हेलुसिनेट करेगा। सो या यही होता है, आई थिंक ये वेरी स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क्स बनाने डेफिनेटली इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप लोगों के, जब अगर आप ये थोड़े प्रोडक्ट्स और मॉडल्स के सिस्टम प्रॉम्प्ट्स देखो, जैसे जो ओपन एआई और जेमिनाई, जो उनके एक्चुअल सिस्टम प्रॉम्प्ट्स वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपको नजर आएगा दे एक्चुअली वेरी स्पेसिफिक। लाइक उनका एक प्रॉम्प्ट एक दो पेजेस लंबा होएगा। लाइक थोड़े लोग तो एक सेंटेंस लिखते हैं, राइट? अपने जब प्रॉम्प्ट बना रहे होते हैं,
ये जो डिफाइंड गाइडलाइंस वाले प्रॉम्प्ट्स होते हैं वो बहुत लंबे लॉन्ग प्रॉम्प्ट्स होते हैं एंड सो ये आपको ऐसे डेवलपर माइंडसेट के साथ थोड़ा सोचना पड़ेगा लाइक व्हाट इज कैसे डिफाइन करो सेम थिंग अगर आप अपने कोई एम्प्लॉय को बोलोगे मैं डेवलपर को बोलोगे मेरे लिए ये चीज़ बनाओ आप उसको कितना कितना इंफॉर्मेशन दोगे राइट आप उसको कितना स्पेसिफिक दोगे मुझे मेरे लिए ये बनाओ आपको ये बनाना होगा ये गाइडलाइंस है ये सेम थिंग विद एआई थैंक यू सर। ओके जी सर, शहबाज। अस्सलाम वालेकुम सर। पाकिस्तान अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम एलएलएम को यूज़ करते, अगर कोई रैग एप्लीकेशन बनाते हैं या कोई स्पोर्ट्स चैट एजेंट बनाते हैं, या फर्ज करें हम कोई डेटा एनालिस्ट की जॉब लेते हैं, उससे उससे सीएसवी फाइल शेयर कर देते हैं, तो रैग और चैट स्पोर्ट्स चैटबॉट के ये केस में और ये डेटा एनालिस्ट के केस में जब हम उससे कंपनी का या क्लाइंट का या कोई पर्सनल डाटा शेयर करते हैं, तो एलएलएम उसको कितना यूज़ करता है? क्या वो एलएलएम की मेमोरी में सेव हो जाता है? हाँ सो डिपेंड करता है आपने किस किस तरीके से रैग एंड मॉडल इस्तेमाल कर रहे हो अगर आप वो सब इंफॉर्मेशन पब्लिक वाले जीपीटी वगैरह में डाल रहे हो देन या वो सब इंफॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहे होगा ट्रेनिंग के लिए लेकिन अगर आप लोकली होस्ट करके मॉडल इस्तेमाल कर रहे हो राइट सो अगर आपने लामा यूज़ किया है और जो भी अदर मॉडल जिसमें आप आप हगिंग फेस पर और ए डब्ल्यू एस पर जहाँ पर भी होस्ट करके आप खुद ही मॉडल को होस्ट कर रहे हो राइट लाइक लामा इज अ ग्रेट एग्जांपल वेयर आप खुद ही होस्ट करते हो जो भी डेटा आप लामा को दे रहे हो इन दैट सेंस इट इज सिर्फ आपका डेटा मेटा और जो भी उस इंफॉर्मेशन पर अपना कोई एक्सेस नहीं है राइट बट अगर आप ऑनलाइन वाला जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हो और ऑनलाइन वाला जमना इस्तेमाल कर रहे हो देन हाँ देन वो जो भी आप उसको डेटा दे रहे हो वो इस्तेमाल करेगा देन वो ट्रेन करेगा उसमें आपका इंफॉर्मेशन हो सकता है हटा दे इन टर्म्स ऑफ लाइक आपका नाम और आपका ईमेल एड्रेस पर अगर आपने उसको एक एक्सेल एक्सेल फाइल दी है जिसमें 1,000 लोगों के नाम एंड 1,000 लोगों के बैंक इंफॉर्मेशन उसमें लिखा हुआ देन हाँ दैट वो एक्सेल फाइल जीपीटी इस्तेमाल करेगा एंड ट्रेन अपने आप को उस पर ट्रेन करेगा राइट सो जब आप ऐसे प्राइवेट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पर ए आई यूज़ करोगे आपको अपना वो चीज़ें आप खुद ही होस्ट करनी होगी राइट लाइक लामा लामा को ए डब्ल्यू एस पर और जहाँ पर भी हगिंग फेस पे डाल के उस पर ऐसे दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यूज करना चाहिए बिकॉज देन it it is safe right it's just in your hugging face llama पर वो इंफॉर्मेशन रहेगा वो जाके इंटरनेट पर जाके ट्रेन नहीं होगा उस पर थैंक यू सर। जी उमर, सर उमर। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ साद भाई, तला भाई, मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ, यूएस में ही एआई पे ही काम कर रहा हूँ। तो मेरा ये था, पिछले कोर्स में भी मैं था, वो कंप्लीट ले लिया। अभी कोई ऐसा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के जिसके अंदर रह के मेरे पास भी कुछ आइडियाज़ हैं जिन पे काम हो सकता है, सास के किसी मॉडल के ऊपर या एआई के जनरल ऐप डेवलपमेंट पे। आया कोई ऐसा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म मुयसर हो सकता है कि जिसमें हम मिलके इसे कर सकें, आपके साथ या किसी और के साथ आप नेटवर्क करवा दें? honey definitely makes sense I think I'm sure Tata and iCloud Guru and Aspire can just probably have a better answer in terms of because वो लोग I think यही नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं बट फॉर मी अगर आप यूएस में स्पेशली
एक ग्रुप्स लाइक अगर आप ऑनलाइन देखो, अगर बहुत सारी गैदरिंग्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ यही वाले, जैसे आप बोल रहे हो टाइप ऑफ बंदे मिलके इन चीज़ों पे अपने शेयर करते हैं, अपने को फाउंडर्स ढूंढते हैं. एंड सो आई डेफिनेटली रेकमेंड काइंड ऑफ ईदर लिंक्डइन पर, कभी कभार फेसबुक पर एज वेल. तो अदर प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे इवेंट ब्राइट वगैरह, पर काइंड ऑफ ये टाइप ऑफ मीटअप्स होता है ऑनलाइन वाइज. हाँ, आई गेस थोड़ा ट्रिकी होता है, रेडिट वगैरह होता है ऐसी वाली चीज़ें, बट अपना आइडिया शेयर करने um, लोगों के साथ प्योरली ऑनलाइन थोड़ा ट्रिकी होता है, बिकॉज आपको पता नहीं वो यूज़ कैसे यूज़ करेंगे वो आइडिया. पर जब आप लोगों से इन पर्सन मिलते हो, मैंने नोट किया है आप एक आपको पता चल जाता है कि आप एक इंसान और बंदे से इन पर्सन जाके मिलते हो, and एक लेवल ऑफ कनेक्शन और ट्रस्ट होता है. एंड सो वो इस थोड़े डिफरेंट नेटवर्किंग मीटअप्स वगैरह होते हैं, स्पेशली सैन फ्रांसिस्को में. तो आई गेस मैं सैन फ्रांसिस्को के तौर पर बोल रहा हूँ. सैन फ्रांसिस्को में बहुत almost हर दिन ऐसी टाइप ऑफ मीटअप्स हो रहे होते हैं. So definitely recommend करूँगा, but इस question पर I guess maybe Talha or someone from iCoder or Aspire might have a better answer, because I know I'm sure बहुत सारे लोग in classes में exact same thing सोच रहे होंगे. सर मैं जैसा कि कुछ लेक्चर्स में आपने भी कहा कि मैं खुद यानी इस तरह से इंक्यूबेशन करता हूँ अगर आइडियाज़ अच्छे हों डिस्कशन के बाद, तो आपके साथ पर्सनली इसमें कोई पॉसिबिलिटी है, या फिर तलहा आप अगर काइंडली इसमें बता दें. Yeah, I'm definitely always open, like in conversations के लिए, like मेरा LinkedIn यहाँ पर, so feel free, like मुझे मैसेज करो and then we can जी सर talk उमर, आप जो otherwise. सर डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा तो वी कैन टॉक अबाउट इट. जी ओके, थैंक यू. थैंक यू. ओके जी सर, असद बुखारी. अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन प्राइवेसी से रिलेटेड है। लाइक जब हम अपनी खुद की कोई प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं या अपना एक रैग एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, तो उसमें हम बिग जो मॉडल्स हैं जिस तरह ओपन एआई है या जेमिनाई है, तो इसकी एपीआई कीज यूज़ करते हैं। तो अगर हम जो मेरे कस्टमर्स हैं वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उस एप्लीकेशन के ऊपर, तो आई थिंक कि वो डाटा इन बिग एलएलएम्स के पास भी जा रहा है। तो इस केस में मैं अपने कस्टमर्स के जो डाटा को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ इन पब्लिक जो एलएलएम्स है ना, इन पे जाने से। Makes sense. And so अगर आप पब्लिक LLM इस्तेमाल करने चाह रहे हो, राइट, लाइक GPT वगैरह, उनके पास certain plans और सब्सक्रिप्शन जो भी होता है. So for example, GPT Enterprise जो है, it's कंपनीज के लिए बनाया हुआ है, राइट. सो लाइक GPT Plus and GPT Pro जो है वो एवरेज पर्सन, पर्सन टू पर्सन उनके लिए बनाया हुआ है, उस पर उनका डेटा ट्रेन हो रहा होता है. लेकिन अगर आप जीपीटी एंटरप्राइज फॉर एग्जांपल इस्तेमाल करो, उसमें वो आपको प्रॉमिस कर रहे होते हैं दैट जो भी डेटा आप उनको दे रहे हो, दे उस पर वो स्टोर एंड उस पर ट्रेन नहीं कर रहोगे. दे आर नॉट storing or training on that data if you use GPT Enterprise. Obviously, उसके लिए आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, because obviously आप कंपनी के तौर पर GPT को इस्तेमाल कर रहे हो. लेकिन if you use GPT Enterprise, they do not, they promise you that they are not using storing training on आपके customer के data पर, right? Um, and so definitely number one option है अगर आप GPT इस्तेमाल करना चाह रहे हो. And then अगर आपको alternative options देखने हैं, then self-hosted models obviously is सबसे सिक्योर होते हैं, बिकॉज आप खुद ही जैसे लामा और जो भी है अपना अपने ही सर्वर पर होस्ट कर रहे हो, आप उस पर डिसाइड कर रहे हो क्या डेटा कैसे इस्तेमाल हो रहा है. एंड सो उस पर ऑब्वियसली आपका कस्टमर्स डेटा पूरा सेफ होता है एज वेल. बट अगर आप पब्लिक मॉडल्स यूज करना चाह रहे हो, आई थिंक जीपीटी, जेमिनाई एंड क्लाउड जो है, उन तीनों के पास एंटरप्राइज और कंपनी लेवल प्लान्स होते हैं जिसमें आपको प्रॉमिस करते हैं
they are not using your data or using your customer data, but उसके लिए आपको obviously पैसे थोड़े ज़्यादा देने होते हैं. थैंक यू सो मच सर। आई थिंक सर हम हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हाँ, awesome. थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग द पार्टिसिपेंट्स। आपने काफ़ी अच्छा वेबिनार डिलीवर किया एंड इट वाज ग्रेट कि हम डिफरेंट साइट्स फ्रॉम द एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू एआई को हम अंडरस्टैंड कर सके कि किस तरह करके हम उसको एथिकली यूज़ करें। Hi, no, definitely not. Appreciate it. No, thank you. And yeah, again, अगर if किसी के पास questions हो or ideas हो, feel free LinkedIn पर reach out कर लेना. But I definitely agree ये जो because I know जब मैं पिछले presentations और webinars दिए, बहुत सारे लोगों ने actually questions पूछे थे. मैं healthcare or hospitals में AI बनाना चाह रहा हूँ, but वो रेजिस्टेंट होते हैं और वो एआई से डर रहे होते हैं लॉ में फाइनेंस में एंड इस वजह से ये हेजिटेंट होते हैं बिकॉज इंटेल ये लेवल ऑफ ethical compliance and थोड़ा इंश्योरेंस जो होता है hospitals वगैरह जो है they're going to be very resistant, right? And so जब तक if people can figure this piece out, then ये जो बड़े बड़े use cases होते हैं like a AI doctor, right? AI lawyer, फिर ये वाले products actually बन सकते हैं and obviously in products में बहुत growth and opportunity and पैसे भी होते हैं, but you can't make it until you make this framework of being ethical, sure, and सब कुछ validated and unbiased हो. Yeah. So hopefully आप लोग थोड़ा वो सोच के because I know in sessions में especially hospitals, doctors and healthcare में बहुत सारे लोगों कोशिश कर रहे हैं AI बनाने. Um, ये ethical aspect is going to be is probably number one अगर आप उन type of applications बनाने चाह रहे हो. So and then yeah, feel free आप अगर questions है और ऐसे ही बस a conversation करना you can reach out on LinkedIn as well. So thank you. Yeah. थैंक यू सो मच सर एवरीवन। मैंने सर का लिंक्डइन जो है वो चैट में शेयर कर दिया है। फील फ्री टू रीच आउट सर। एनी काइंड ऑफ गाइडेंस यू नीड जस्ट मैसेज सर एंड ही विल गाइड यू। Yeah, thank you. थैंक यू सो मच सर। Uh, ओके सर वी कैन टेक आई विल टेक क्वेश्चंस। अगर आप लीव करना चाहते हैं तो यू कैन लीव uh, एज यू वर सेइंग but दैट यू हैव सम अगर हेल्थ questions इश्यूज। है happy in there. Let's be yeah. ओके नो प्रॉब्लम। Right. ओके एवरीवन अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। सर तलहा मेरा क्वेश्चन आपसे है कि ये जो जनरेटिव एआई प्रोग्राम है इसका कोहोर्ट 3 कब स्टार्ट होगा, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से शुरू करना है। मैंने काफ़ी लेट ज्वाइन किया था और मुझे नहीं लगता मैं अभी कॉप अप कर पाऊंगी क्योंकि क्विज़ेस वगैरह की भी डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। तो आप बता सकते हैं कि क्या मैम एक्सपेक्टेड। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट मंथ के अंदर जो है ना न्यू स्टार्ट होगा तो आप उसको जो है ज्वाइन कर सकती हैं। होप सो नेक्स्ट मंथ के अंदर स्टार्ट होगा। एंड ओके थैंक सेकेंडली यू। एक जस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर लाइक नेक्स्ट वीकेंड हमारे पास आ रहा है ऑन 25। ठीक है लाइक 25 की फ्राइडे के नाइट को 9 PM पे हमारी हैकाथॉन स्टार्ट होगी। ठीक है जिसके अंदर एवरीवन कैन पार्टिसिपेट। उसके बारे में जो गाइडलाइन होंगी लाइक आपने क्या करना है कैसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं एवरीथिंग विल बी शेयर्ड ऑन द वेडनेसडे डे लाइक 23 हम जुलाई को ये चीज़ें देखेंगे हैकाथॉन के अंदर क्या क्या चीज़ें आपने करनी है। क्या प्रेजेंटेशन बनानी है प्रेजेंटेशन में क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए किस तरह का काम होना चाहिए ये चीज़ें। ठीक है तो ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। जी मैम सायरा। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो हैकाथन होगा हम इसमें इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करेंगे या फिर इन अ टीम? मैम एज अ टीम।
लाइक थैंक मिनिमम पार्टिसिपेंट मैं बता दूंगा कि जी कितने जी होने चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दैट आप टीम बना सकते हैं। एनीवन कैन पार्टिसिपेट, जरूरी नहीं कि वो कोहोर्ट का पार्ट हो या लाइक बाहर से हो। आपके फ्रेंड्स, आई कोड गुरु से मेंबर्स, इन ग्रुप्स में से मेंबर्स, एनीवन कैन पार्टिसिपेट। ओके, एनीवन थैंक यू सो एल्स? मच सर। वेलकम। एनीवन एल्स? ओके, आई थिंक सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया। सो थैंक यू सो मच सर साद फॉर गिविंग अस द टाइम एंड गिविंग द अस द नॉलेज रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल यूजेज ऑफ एआई, कि हम किस तरह करके एआई को अपने हाथों में रखें, लाइक इनडायरेक्टली, कि वो आउट ऑफ बाउंड ना चले जाए, जस्ट हेलुसिनेशन कंट्रोल किया जाए उसके ऊपर, या जो बाइसनेस क्रिएट होती है वो हम किस तरह करके रिमूव करें, ट्रांसपेरेंसी किस तरह लेके आए। तो थैंक यू सो मच सर साथ फॉर गाइडिंग अस। अरे थैंक यू अजय, हैप्पी है वो, रोज मजा आता है आप लोग के साथ बात करने, प्रेजेंट करने से। अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह प्लीज फील फ्री टू रीच आउट लिंक्डइन पर। Okay everyone, if no one has question then we can end the meeting. Bye. Yes sir. No, bye. I just said, okay, bye. Okay, okay. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। अल्लाह Bye. हाफिज, Take care, टेक guys. केयर। इंशाल्लाह हम कल दोबारा सेशन करेंगे, और कल हमारा जो सेशन होगा वो फ्रीलांसिंग के ऊपर होगा। लाइक आप किस तरह जो ये स्किल आपने सीखी है, आप किस तरह मार्केट के अंदर जाके इसको सेल कर सकते हैं, लाइक प्रोजेक्ट कैसे ले सकते हैं या उसको किस तरह करके सेल करना है। तो कल इसके ऊपर सेशन होगा, तो एवरीवन मस्ट ज्वाइन इट। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।